today's tutorial is on spring. आज का ट्यूटोरियल मैं जो है बाहर पर बना रही हूँ. आई एम मेकिंग अ डेकोरेशन पीस फॉर स्प्रिंग and for that I choose a kite as it is kind of a special symbol in Pakistan for welcoming its spring. तो मैंने डेकोरेशन पीस जो बना रही हूँ उसके लिए मैंने पतंग को चूज़ किया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए पतंग जो है वो एक मेन सिंबल है स्प्रिंग को, बाहर को खुशामदीद कहने का. आई हैव टेकन दिस कार्डबोर्ड, एज यू कैन सी मैंने जो है ये कार्डबोर्ड लिया है. नाउ आई हैव दिस वोवन फैब्रिक, और ये जो है ओरिजिनली वोवन फैब्रिक है मेरे पास दैट आई एम गोइंग टू यूज़. यू कैन यूज़ any kind of fabric that you have, a beautiful one, or any kind of paper that is available at your side. आप जो है कोई भी अच्छा सा खूबसूरत सा कपड़ा यूज़ कर सकते हैं. मैंने ये बुना हुआ कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ, हाथ से बुना हुआ ये. इट इज़ हैंड वीव्ड एंड वॉज गिफ्टेड बाय माई फ्रेंड. ये जो है हाथ से बुना हुआ है और ये जो है मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दिया था. सो आई एम गोइंग टू यूज़ इट इन अ प्रोजेक्ट, और मैं अब जो है इसको एक खूबसूरत से प्रोजेक्ट में यूज़ कर रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. तो शुरू करते हैं. एज आई एम गोइंग टू मेक अ स्टैंड ऑफ इट, मैं जो है क्योंकि इसका स्टैंड बना रही हूँ, सो आई एम डूइंग द मार्किंग्स फ्रॉम द सेंटर. तो मैं इसके लिए सेंटर से मार्किंग कर रही हूँ. अब इसको काट लेते हैं. Okay guys, the kites are ready. One is of holder kite to make it stand like this, and the other one is a hanging kite. Kite के पीछे मैंने होल्डर लगाया, स्टैंड लगाया ताकि वो खड़ी हो सके, और दूसरे को मैं हैंग करूँगी. To make it more decorative, I have taken this stem that is used in flower making. मैंने इसको और ख़ूबसूरत बनाने के लिए ये स्टैंड लिया है जो कि फ्लावर मेकिंग में यूज़ होता है. That I'm going to fix over here, और मैं इसको यहाँ फिक्स करूँगी. Okay, now I'm going to fold it.
गोइंग टू पेस्ट इट। अब जो है मैं इसको पेस्ट करूँगी विद ग्लू गन के साथ। नाउ आई प्रिपेयर्ड दीज बोज। अब मैंने जो ये बो कुछ तैयार की हुई है और अब मैं इनको लगाऊंगी टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल। tada, it is ready. Spring project, welcoming spring project is ready. Hope you guys like the idea. उम्मीद है आप लोगों को आइडिया अच्छा लगा होगा। बाहर के मौसम का प्रोजेक्ट तैयार है। So what you guys have to do is comment, like, share and subscribe. Comment, like, share और subscribe करना ना भूलिएगा। See you guys in next tutorial. अल्लाह हाफिज़।